दोस्तों, मैं हूं मेहरान अली और आप देख रहे हैं मेहरान टीवी यूट्यूब चैनल। आज हम लिटरेरी क्रिटिसिज्म के एमसीक्यूज़ करेंगे जो 10 के करीब जो हैं वो पीपीएससी के इंग्लिश लेक्चर के पेपर में आते हैं। इन द डिफेंस ऑफ पोइट्री, व्हाट डिड सिडने एट्रीब्यूट टू पोइट्री? इसका सही आंसर है अ मॉरल पावर वेयर बाई पोइट्री एनकरेजेस द रीडर टू एमुलेट वर्चुअस मॉडल्स। उसके बाद है विच पोएट asserted in practice and theory the value of representing rustic life and language as well as social outcasts and delinquents, not only in pastoral poetry common before the poet's time but also as the major subject and medium for the poetry in general. William Wordsworth, who wrote done for not keeping of accent deserve hanging. Ben Jonson, who wrote the following about Milton: he is admirable as Virgil and Dante, and in this respect he is unique among us. Arnold wrote, with him is born our real poetry. Whom does this refer to? Chaucer. Arnold, in his The Study of Poetry, estimated Chaucer in terms of real estimation, who believed that poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings. Wordsworth. Matthew Arnold said, an ineffectual angel beating in the void his luminous wings in vain. Shelley, for whom it is said sensuousness is a paramount bias of his genius. Keats, who said this poetry is a criticism of life. Matthew Arnold, in Shakespeare's tragedies, character is not destiny, but there is a character in destiny. Bradley, poetry is not like reasoning, a power to be exerted according to the determination will, is a statement by Shelley. Dash is called the first romantic critic, Longinus. उसके बाद है Dash defines a play as a just and lively image of human nature. Dryden, who considered Hamlet to be artistic failure. यह है Eliot, who believed that Shakespeare did much better in comedy than in tragedy. Johnson, who said the true opposite of poetry is not prose but science. ये जो है ये कन्फ्यूजन है, ये कॉलरिज ने आई थिंक कहा था, टी.एस. एलियट ने नहीं. ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट इज़ अ क्रिटिकल एसे. टी.एस. एलियट. प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन, ये पोप ने कहा था. द वर्ड रिनेसा मीन्स रिवाइवल. द आर्ट फॉर आर्ट से थ्योरी जो है ये प्रेजेंटेड बाय, ये जो है इसने प्रेजेंट नहीं की थी, वाल्टर पीटर ने की थी. वाल्टर पीटर उसने की थी. दिस इज़ फॉर द वर्ल्ड टू डिसाइड वेदर यू आर ए पोइट आर नॉट. ये जो है फ्रॉस्ट ने कहा था, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने. इस तरह ये गलत भी ऑप्शन दिए गए हैं. द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन, द लाइन टेकन फ्रॉम द वर्क ऑफ पोप. देर इज़ नो मैन लाइक शो मैन, ये शेक्सपियर ने कहा था. हु हैज़ डिफाइंड ट्रेजिडी एज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन, एरिस्टोटल. इन शेक्सपियर करेक्टर इज़ नॉट डेस्टिनी, ये देखें बाद में ब्राडले. उसके बाद जो है वह ए पोइट इज़ अ मैन स्पीकिंग टू मैन, कौन कहता है? वर्ड्सवर्थ. प्रीफेस टू शेक्सपियर इज़ रिटन बाय, ये प्रीफेस टू शेक्सपियर किसने लिखा है? ये जनाब जी डॉक्टर जो है वो डॉक्टर जॉनसन ने लिखा है. उसके बाद है एपोलॉजी फॉर पोइट्री इज़ रिटन बाय फिलिप सिडनी. द क्वालिटी व्हेन मैन इज़ कैपेबल ऑफ बीइंग इन अनसर्टेनिटीज़, ये जो है नेगेटिव कैपेबिलिटीज़. पोइट्री स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो, वर्ड्सवर्थ. उसके बाद है अ पोएम मॉर्निंग समवंस डेथ इज़ कॉल्ड एन एलेजी. अ लॉन्ग पोएम इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ शॉर्ट पोएम्स. ये किसने कहा था? इनमें से कोई भी नहीं है, ये सर्च कर लीजिएगा, कन्फ्यूजन है मेरी इसके बारे में. अ पोएम विच कंसिस्ट ऑफ 14 लाइन, सोनेट. टी.एस. एलियट वाज क्रिटिक भी था, पोइट भी था. आर्नल्ड्स जजमेंट ऑफ चासर इज दैट चासर वाज नॉट एज ग्रेट एज द क्लासिस्ट. सिडनीज एपोलॉजी फॉर पोइट्री इज रिस्पॉन्स ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स. स्टेफन गोसन. उसके बाद बेकन पॉपुलराइज द इंडक्टिव मेथड फॉर अराइविंग एट ट्रूथ इन हिज नोवम आर्गोनम. यस, who has defined essay as respectacle for detached thoughts and dispersed meditation. Bacon, who is the writer that viewed Latin would last as long as books last and that the vernacular would one day play the bankrupt with books. Bacon ने कहा था.
In which book Stephen Gosson called the poets caterpillars of Commonwealth and the father of lies, book of School of Abuse. उसके बाद है who is Wordsworth referring in brother Englishman and friend, ये कॉलरेज को कह रहा है. Who has coined the phrase Marlowe's mighty line, ये है जी बेन जॉनसन. उसके बाद है द एपिथेट Augustine was the first applied to Dryden by Dr. Johnson, who is talking about whom in he found of brick and left of marble regarding application of classical rules to English literature. Dr. Johnson about Dryden, who wrote the following regarding the now morality. I shall endeavor to enliven morality with wit and to temper wit with morality. Addison. Swift said to Pope, I heartily hate and detest that animal called man. ये जो है इन विच ऑफ स्विफ्ट नावल डू फाइंड दिस थीम गुलिवर्स ट्रैवल में. द आर्ट ऑफ पोलिटिकल लाइंग वाज रिटन बाय जॉन आर्बथनॉट. नाउ डैश एक्सेप्ट द नक्टर्नल रेवरी ऑफ लेडी विंचेल्से and a passage of two in the Windsor Forest of Pope. The poetry intervening between the parallel lost and the seasons does not contain a single new image of external nature. William Wordsworth. The age of restoration is called so because Charles II was restored in that age. The first 8 lines of a sonnet are called octave. The repetition of sounds in a sequence of words is called alliteration. Feminine ending is metrical device. Persona is the actor in a play. The phrase line or lines repeated at interval during a poem and especially at the end of stanza is called refrain. Verse liber is called as free verse. उसके बाद है placing phrase or sentences similar construction and meaning and balancing each other is called parallelism. उसके बाद है an elaborate classical form in which one shepherd singing laments the death of another is called. अच्छा जी, the poets who believe that a hard clear image was essential to words are called images. A figure of speech which contains an exaggeration for emphasis is called extended metaphor. Rhymed decasyllable nearly always in iambic pentameter rhyme in pairs are called heroic couplet. An exhortatory speech usually delivered to a crowd to incite them for some action is harangue. Hearing a color or seeing a smell is synesthesia. Dryden's essay of dramatic poesy had the background of criticizing English literature by a French diplomat, Samuel Sorbery. Who among the following can be considered a mouthpiece of Dryden in his essays of dramatic poesy that was written in a dialogue form? Nander. Which literary group derived its philosophy from More's principle Ethica, which says by far the most valuable thing are the pleasure of human intercourse and the enjoyment of beautiful objects? The Bloomsbury group. उसके बाद है in which of the following did Dryden say done affects the metaphysics discourse of satire? Who extended the term metaphysical from Dun to school of poets? Dr. Johnson. A papist is a true answer is Roman Catholic. Which of the following deals with the popish plot? Absalom and Achitophel. In which of following did Dr. Johnson extend the use of term metaphysical to school of poetry? Life of Cowley. What could be underlying spirit of the following lines? Imitation of the ancient. Who wrote true wit is what often was thought but never so well explained? Pope. Swift in his opinion always in the wrong. John Dryden. Dryden's The Medal, a personal satire, is aimed at Shaftesbury. Samuel Butler's Hudibras satires Puritanism. When did Dr. Johnson consider the father of English criticism? John Dryden. Absalom and Achitophel is a political satire. Dash of Shakespeare are examples of the comedy of manner. Much ado about nothing and love labors lost both. My soul had been a lawn, best sprinkled over with flowers and stirring shades, and baffled dam is an example of metaphor. Iron
आयरन, टाइम्स ऑफ डाउट्स, डिस्प्यूट, डिस्ट्रैक्शन। ये देखिए डाउट्स, डिस्ट्रैक्शन, ये जो है एलिट्रेशन है, ये एलिट्रेशन है। और ये जो है ये ऑक्सीमोरॉन है। द प्लीजेंट पेन इज़ एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीमोरॉन। बेन जॉनसन कॉमेडी ऑफ ह्यूमर लैक इन डैश विच कैन बी फाउंड इन कॉमेडी ऑफ मैनर। उसके बाद है ये प्लीजेंट पेन जो है ये ऑक्सीमोरॉन है। उसके बाद बेन जॉनसन कॉमेडी ऑफ ह्यूमर लैक्ड इन डैश विच कैन बी फाउंड इन द कॉमेडी ऑफ मैनर। तो इसका जो है वो सही आंसर है वो है सटायर, द कोर्टशिप, विट। ये ऑल ऑफ दिस इसका सही आंसर है, ये नहीं है, ये गलत आंसर पीछे दिया हुआ है। डैश इज़ कंसिडर्ड द लॉन्ग लव्ड मिस्ट्रेस राइम, हेरोइक कपलेट, हेरोइक कपलेट सही आंसर है इसका। इज़ पॉप पोएट, इफ़ पॉप बी नॉट ए पोएट वेयर इज़ पोइट्री टू बी फाउंड, डॉक्टर जॉनसन कहते हैं। कैन वी से दैट मैथ्यू आर्नल्ड एस्टिमेट्स पॉप टू बी क्लासिस्ट, येस। द proper study of mankind is man, जो है they believe in the study of human nature. True wit is nature to advantage dressed. What often was thought but never felt, वही लाइन। तो ये जो है दिस लाइन्स सजेस्ट क्या करती हैं, ओनली मैनर ऑफ एक्सप्रेशन। पैरोडी इज़ अ फॉर्म ऑफ बर्लेस्क, बर्लेस्क पैरोडी एंड ट्रेवेस्ट्री जो हैं वेरियस फॉर्म्स ऑफ सटायर हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन